शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः 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 शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु आवाज नहीं आ रही है बहुत ही कारगर माध्यम है ये स्किलिंग एंड अर्निंग दोनों को साथ मिला के काम करता है और हमारे को करते हैं उससे हमें ये लगता है कि इससे बच्चों का होते हैं उनकी और हमारे एस्टैब्लिशमेंट और वर्कफोर्स मिलता है ये प्रधान की बात कर रहे हैं अपेंडिक्स में आधे में काफी इंस्पिरेशन हमें काफी सुधार आने की कॉर्डिनेट करेंगे हमारे टोटल बनाना नेटवर्क का मैं तो कम्युनिकेट करता हूँ और हमारी पार्लियामेंट की नीति के सामने भी अगर से एनवायरमेंट कल्चर चिंता इंडिया की बना
This is the देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत नागरिकों में कौशल की महत्वता, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना एवं दुनिया भर में अवसर उपलब्ध करने का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया। भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में अप्रेंटिसशिप पर खास जोर दिया गया, जो कि एक ऐसा स्थायी मॉडल है जिससे कुशल कार्यबल को बढ़ावा मिलने के साथ ही कंपनियों को भी कुशल युवाओं की प्रतिभा से फायदा मिलता है। NATS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम और NAPS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जैसी प्रमुख योजनाएं युवाओं को उनके कार्यक्षेत्र में सीखने का फर्स्ट हैंड मौका देती है। 2016 में NAPS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत भारत में उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए लाया गया। NAPS में अब तक देश के 25 लाख से भी अधिक अप्रेंटिस एंगेज हो चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग के साथ सर्विस ट्रेड्स से जुड़ने पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में एनरोल होने वाली महिला अप्रेंटिसों की संख्या पिछले 5 वर्षों में आज 7 गुना बढ़ गई है। नई टेक्नोलॉजी के आगमन और बदलते समय के साथ युवा आज के अनुसार के जॉब रोल्स की भूमिकाओं में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ले पा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018 से 2023 तक 40,655 एस्टैब्लिशमेंट्स अनेकों सेक्टर्स में अप्रेंटिसेस को एंगेज कर चुके हैं। स्कीम को और भी व्यापक बनाने के लिए आज भारत सरकार ने प्रत्येक अप्रेंटिस को DBT के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है, जिसमें उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रति माह 1500 रुपए तक अमाउंट सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज DBT को देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक ग्लोबल मॉडल के रूप में बहुत ही सराहना मिल रही है। भारत की इस DBT और डिजिटल ताकत को आज पूरी दुनिया सराह रही है। केंद्रीय सरकार ने 2014 में अप्रेंटिसशिप एक्ट एवं अप्रेंटिसशिप संशोधन नियम 2019 के तहत अनेक संशोधन किए गए, जिससे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को काफी बढ़ावा मिला। आज भारत सरकार द्वारा पूरे देश में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने, उद्योगों तक पहुंच बनाने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेलों को आयोजित किया जा रहा है।
इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा 6 कौशल महोत्सवों को आयोजित किया जा चुका है, जिसमें देश के युवाओं ने पूरे जोश के साथ अपनी प्रतिभाओं को दिखाया और सफलता हासिल की है। पूरे देश में 180 के लगभग इंडस्ट्रियल क्लस्टर की पहचान कर उनके साथ आज अप्रेंटिसशिप मॉडल पर काम किया जा रहा है। आईटीआई में उद्योग समूहों को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के माध्यम से स्किल इंडिया मिशन की मुख्य धारा में ला रही है। आज अप्रेंटिसशिप पोर्टल युवाओं को बहुत आसानी से कंपनियों के साथ एंगेजमेंट और इंटरैक्शन की सुविधा प्रदान कर रहा है। अप्रेंटिसशिप से देश के युवा इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रशिक्षण में कुशल बन रहे हैं। वे सीखते हुए न सिर्फ कमा रहे हैं, बल्कि उन्हें वैश्विक स्तर पर मान्य सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो रहे हैं। ये देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अथक प्रयास हैं, जिसके कारण आज पूरे देश में अप्रेंटिसशिप के क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं तमिलनाडु की ओर। तमिलनाडु से इंडस्ट्रीज के एक समूह से जुड़ रहे हैं जो मुख्य रूप से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस को नियुक्त करते हैं। तमिलनाडु। सर मैं थैंक यू। अब हाँ बताए। धन्यवाद। अब धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हिमाचल प्रदेश के बद्दी क्लस्टर से जुड़ेंगे जिनका अप्रेंटिस इकोसिस्टम में एमएसएमई को एकीकृत करने की दिशा में फोकस है और इसमें 526 इंडस्ट्रीज हैं हिमाचल प्रदेश से। मैं आपसे अनुरोध करूंगी हिमाचल प्रदेश की अपना ब्रीफ में ही इंट्रोडक्शन दे। तरफ से और अपनी तरफ से आप आपकी सहयोगियों को बता करता हूँ और आपको बधाई भी देता हूँ कि यूनिटी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सर हम हमारी एसोसिएशन हनी बस से इंडस्ट्री नौकरियां और स्टाफ के बीच में एक सशक्त प्लेटफॉर्म काम करती है। लगभग 2300 इंडस्ट्रीज काम करती है। 336 लोग इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं और लगभग 3 लाख लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। 8,000 के करीब लोग आज यहाँ पे अंदर दिस नैप स्कीम या नैट स्कीम के अंदर कार्यरत हैं इंडस्ट्रीज में। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जो हिमाचल का नौजवान था वो इंडस्ट्री की तरफ काम करने के लिए इच्छुक नहीं रहता था, लेकिन इस स्कीम के आने के बाद उसका भरोसा इंडस्ट्री में बढ़ा है और जब वो प्रैक्टिस करता है उसके बाद उसका इंडस्ट्री में मन लग जाता है और बहुत तरक्की कर रहा है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
सर हम एक ये इंडस्ट्री एसोसिएशन यहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी चलाते हैं, जिसमें इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम हम करते हैं इंडस्ट्री के लिए भी, और एक एनसीवीटी का स्कीम के अंदर भी कुछ प्रोग्राम चला। ये सेंटर से जुलाई 21 मार्च के अंदर भी एज ए बीपीटी कवर किया गया है, और इसमें आज तक आपको इस कवरेज के बाद हमने 240 बच्चों को ट्रेन किया है, जिसमें से 73 लड़कियां हैं, और ये सब बच्चे यहाँ की इंडस्ट्री में कार्यरत। 100 के करीब और हम जो अप्रेंटिस हैं आज उनको रजिस्टर करने की हमारा जो प्रोसेस है वो चालू। सर हमने जो अभी तक जो ये चीज तैयार की उसमें 55 उद्योगों की भागीदारी से हमने किया है और उनमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें कि ऑटोमोटिव, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं। जैसे नाम लूंगा कुछ सर, जैसे डॉक्टर रेड्डी है। धन्यवाद सर। अब हम हरियाणा की ओर चलते हैं। हरियाणा से एलएनटी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, जो फ्रेशर्स को मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स प्रदान करते हैं, जिससे उनकी आजीविका बढ़ती है। हरियाणा स्टेट, आपसे निवेदन है कि संक्षिप्त में ही अपना परिचय दें। We thank the Honorable Minister for providing this opportunity. I am Saurabh Mittal from L&T. We had fresher apprentices who are 10th and 12th class in mechanic car moving machinery trade, which is a 2-year program. We provide them technical and soft skills training to make them ready for the industry and ensure 100% placement. We are hiring apprentices for the last 30 years and have trained more than 400 plus apprentices so far. We keep our apprentices updated on the latest machineries using biofuel and electric drive as a part of the Green Environment Initiative. All the apprentices the NAPS, and we have also availed the benefits of the NAPS since its launch in 2016. We have also participated in the pilot project of the DBT, and we are looking forward to support the government in such initiatives. Now I will hand over the mic to one of our apprentices who will share his experience. गुड आफ्टरनून माननीय मंत्री जी, मेरा नाम शुभम कुमार है, मैं बिहार से बुलाऊंगा। मैं 12वीं पास किया हूँ। मेरे फ्रेंड ने बताया कि सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसका नाम है अप्रेंटिसशिप। कुछ दिन पहले वो भी एल&टी बहादुरगढ़ से अप्रेंटिसशिप करके एक अच्छे जगह प्लेसमेंट पा चुके हैं, इसलिए हम भी एल&टी से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। सर हमारा ट्रेड है MEMM, मैकेनिक और मूविंग मशीनरी। धन्यवाद। यहाँ सर हमें वो विगत 4 महीने हुए हैं, इतने दिन में हमने बहुत सी चीजें सीख ली। इससे पहले हम सर इंजन के बारे में नहीं जानते थे, हाइड्रोलिक के बारे में नहीं जानते थे कैसे वर्क करता है। जैसे ही यहाँ आए हमने काम किया, उसके बारे में सीखा सर। तो इतने ही दिनों में हमें अपने आप पे भरोसा हो रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में हमें स्किल हो जाएंगे, ताकि और भी कंपनियां हमें जॉब ऑफर कर सकती है। और सर इस स्कीम को चलाने के लिए मैं केंद्र सरकार को दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका नाम दोबारा बताओ बहन। कौन सर? सावन कुमार। सावन कुमार, आपने 12वीं तक पढ़ाई किया? कौन सर? शुभम। शुभम, आपने कहा आप 12वीं तक पढ़े हो, कोई ITI या कुछ स्किल ट्रेनिंग आपने पहले लिया था? नो सर। नहीं सर। नहीं सर। तो फिर आप काम करते थे? सर किसी कारणवश पढ़ाई छूट गया था। हाँ। वही एक हमारे मित्र जो यहाँ से अप्रेंटिसशिप करके एक अच्छे जगह प्लेसमेंट पा चुके हैं, तो उन्होंने सर हमें इस प्रोग्राम के बारे में बताया। मित्र से आपको, आपके दोस्त से आपको पता चला कि अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में जाने से जॉब मिलने में आसानी होगी। यस सर। तो आप अभी कितने दिनों से यहाँ अप्रेंटिसशिप कर रहे हो एल&टी में? विगत 4 महीनों से सर। 4 महीना। और कितने दिन करोगे? 1 year 6 months। 2 साल का कोर्स है। 1 year 2 साल का कोर्स है, 1 साल 6 महीना। 1 साल 2 साल का कोर्स है ये। और आपको उसमें स्टाइपेंड मिलता है अभी? यस, प्रॉपर मिलता है।
प्रॉपरली मिलता है? यस सर। चलो बधाई हो सोन कुमार, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं केरला की ओर। केरल से नॉर्थ मालाबार कंसोर्टियम इंडस्ट्री क्लस्टर से जुड़े हैं, जो मुख्य रूप से बड़े स्तर पर अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम में एमएसएमई को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। केरल। नमस्कार सर। Honorable Minister, we are from North Malabar of India's Consortium, Kannur, Kerala. Our cluster is a joint venture with Government of India and Government of Kerala under Cluster Development Scheme. We are working as a common facility center for the survival of small printers of our area, which is 26 MSME printing units. Average turnover of our consortium is 6 crores. Sir, we have trained 69 fresher apprentices on the strike program in our two trades, which are DTP and mission operator. Both trades have given basic training as well as OJT or on-job training. Sir, more than 55% of our trainees participation is women participation, and we are given them training in most of our modern equipments. So more than 90% trainees are placed after completing their training. So we are leading printers in Kerala by doing the commercial printing works of 3 newspapers, daily printing in our press, including Indian Express, National Daily, and 2 other regional newspapers. Now the demand of printing is increasing day by day, especially in packaging sector and commercial sector. Now we are getting orders धन्यवाद सर। धन्यवाद। for printing in printings also. Thank you sir giving this opportunity. धन्यवाद सर। हमारी इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का अनेक आभार। आप सभी से बात करके यह तो पता चल गया है कि कौशल ग्रहण ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आसानी से इंडस्ट्री रेडी कैंडिडेट तैयार कर सकते हैं और उन्हें एम्प्लॉयबल बना सकते हैं। अब मैं माननीय केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करती हूँ कि वे अप्रेंटिसशिप में डीबीटी का शुभारंभ करें। आज इस स्पेशल इनिशिएटिव का शुभारंभ करके आपने युवाओं को एक नई राह दिखाई है। माननीय मंत्री जी, हम सभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब मैं माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करूंगी कि वह अपने आशीर्वचनों से सभा को संबोधित करें। सर। नमस्कार। आज नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम तथा चिंतन शिविर के इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित हम सभी के मार्गदर्शक हमारे श्री आदरणीय निर्मलजीत सिंह कलसी जी, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आदरणीय अतुल तिवारी जी, विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी तथा डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग डीजीटी मैडम शेट्टी जी, एनएसडीसी की सीओ वेदमणि तिवारी जी, यहाँ उपस्थित सारे महानुभव, इंडस्ट्री, स्टूडेंट, इंडस्ट्री बॉडी, राज्य सरकार तथा भारत सरकार की विभिन्न विभागों की
अधिकारी मित्रगण, पत्रकार मित्रगण, मैं आप सभी को आज की शुभ अवसर पे शुभेच्छा देता हूं। मोदी सरकार की एक विशेषता है चीजों को कितनी ज्यादा पारदर्शी हम कर पाए, ट्रांसपेरेंट कर पाए, सिमलेस कर पाए, प्रोसेस ड्रिवन कर पाए, यह हमारी सरकार की काम करने की एक प्रायोरिटी है। उसी को आगे बढ़ाते हुए जब डीबीटी की बात हम लोगों ने रखा कि जब हम लोगों ने 2014 में सरकार में आए तब कई सारे विषय में जो सरकार की दायित्व होती है कैश पेमेंट में, उसको डायरेक्ट बैंक खाते में कैसे पहुंचाया जाए, एक मुहिम चली। जनधन बैंक अकाउंट खोला गया, कई सारे सरकारी देनदारी पेमेंट्स ट्रांसफर कराया गया डायरेक्टली। आज लाखों करोड़ रुपया की ट्रांसफर हर एक महीने विभिन्न स्कीमों में होती है। जब ये अप्रेंटिसशिप की बात हमारे सामने आई, मैंने आग्रह रखा था क्या ये डीबीटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं अतुल जी को, उनकी पूरा टीम को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने आज खुद तो किया ही, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भारत सरकार की पैसा है, बैंक तो भारत सरकार की है, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करके उनको पहुंचा देना बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। वो इसीलिए बधाई की पात्र है, उन्होंने इंडस्ट्री को भी मनवा लिया। इंडस्ट्री की जो हिस्सा है, जिसकी जो हिस्सा है उसको पहले वो डाले, फिर सिग्नल आने के बाद दिल्ली अपने हिस्से की पैसा डाले। 1,500 रुपया हो सकता है, 1,000 रुपया भी हो सकता है। टोटल उस अप्रेंटिसशिप में इंडस्ट्री जितना चाहेगा पेमेंट देने के लिए, स्टाइपेंड देने, पेमेंट तो नहीं कहा जाए, स्टाइपेंड देने के लिए उस स्टाइपेंड की जितना अमाउंट होगा इसकी 25% नहीं तो मैक्सिमम कैपिंग वही 1,500। आज उसकी 1,00,000 अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग्स को एक स्विच दबा के हमने डीबीटी करवाया। ये आने वाले 24 घंटे के अंदर ये पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं अतुल जी और उनकी टीम को और पूरा इंडस्ट्री को बधाई देता हूं। मित्रों, इंडस्ट्री के मन में एक सही शंका थी, और आज जो यहाँ स्टूडेंट्स बैठे हैं और जो स्टूडेंट मेरे बातों को डिफरेंट जगह में बैठ के सुन रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, यह आपका एक पढ़ाई और कमाई दोनों की एक पायलट मॉडल है, ये नौकरी नहीं है। अप्रेंटिसशिप के कारण इंडस्ट्री को कोई बाध्यता नहीं है उनको अपने वहां स्थायी रूप में नौकरी रखने के लिए। मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं। भारत सरकार उसकी एक्ट को बदला, अप्रेंटिसशिप एक्ट को बदल के पहला सरलीकरण किया। कोई बाध्यता नहीं है अप्रेंटिसशिप को नौकरी में कन्वर्ट करना, क्योंकि उसके कारण कोई अप्रेंटिसशिप में, पहले भी अप्रेंटिसशिप एक्ट था, अप्रेंटिसशिप के लिए एक दुनिया बनी थी, लेकिन कोई डर के मारे उसमें हाथ नहीं लगा रहा था, क्योंकि उसको लेने से फिर वो यूनियन शुरू हो जाएगी। आज भी जगह जगह पे नौजवान अपने हुनर से ज्यादा, कुछ जगह पे, सब नहीं, अब तो हमने देखा बिहार का शोभम कुमार 12वीं पास करके 2 साल एलएनटी तक पहुंच के काम कर रहा है, कुछ स्टाइपेंड मिल रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को ठीक से स्टाइपेंड मिल रहा है और कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसको अभी डिग्री क्या मिलेगा, उसकी कॉम्पिटेंसी, इक्विवेलेंसी क्या किया जाएगा। मैंने अभी जो अतुल जी और कलसी जी को कहा कि भाई 2 साल बच्चा ने समय लगाया, तो उसको 12वीं तो पास किया है, वो डिप्लोमा भी वो दे सकते हैं, क्यों 10th के प्लस 3 साल पढ़ने में वो डिप्लोमा हो जाता है। ये 10th के प्लस बाद 11-12 पढ़ा, तो 2 साल की ये अप्रेंटिसशिप की काम करेगा। अभी नया व्यवस्था में उसको कैसे हम एक कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाए और उसको डिग्री में या उसको डिप्लोमा में कैसे कन्वर्ट करे, मेरे ख्याल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी ये सभी विषयों में रास्ता हमको दिखाया है। मेरा पूरा विश्वास है 2 साल वाले व्यवस्था को भी आप कैसे उसको अकोमोडेट करोगे, आप देखोगे।
और पिछले अभी तक 18-19 से इस कार्यक्रम शुरू हुई। 18-19 में इस कार्यक्रम को शुरू होने के उपरांत अभी तक लगभग 25 लाख बच्चे या उसकी लाभार्थी बने। इस बार इसका टारगेट रखा गया है 10 लाख एक साल में। एक साल में टारगेट, ये लंबी छलांग लगाने के लिए एक मन बना है सबका, और मेरे को पूरा भरोसा है क्योंकि इंडस्ट्री उसकी अहम भूमिका में रहता है। इंडस्ट्री मन बनाया है, इंडस्ट्री मन बनाया है कि आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी के साथ क्वालिफाइड लोग एक प्रोसेस में मिलेंगे। आपको बाध्यता नहीं है किसको लेना, आप इंटरव्यू करके लेते हो। आप हम लोग हर एक महीने में एक सेट हो गया है देश में, राज्य सरकारों की नेतृत्व में शायद सभी जिलों में उसकी सिलेक्शन होती है। यस, उससे कुछ ऊपर की सेंटर में होती है। सभी जिलों में पोर्टल के माध्यम से सभी जिलों में मेला टाइप का, मैंने एक दो जगह पे गया है कभी, वहाँ इंडस्ट्री भी आता है, लोकल आईटीआई ट्रेनिंग इकोसिस्टम के लोग बैठते हैं और सिलेक्शन करते हैं बच्चों को, उनको जो पसंद होता है उनको लेके जाते हैं, फिर उनको 6 महीना, साल भर, 2 साल तक रखते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं, फिर वो मार्केट में जाता है, अपने कॉम्पिटेंसी के ऊपर वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, एंटरप्रेन्योर भी बनता है उसमें से कोई। और इस बार इसको 10 लाख तक लेने के लिए योजना बनाई गई। हम इतने में अटकेंगे नहीं, अभी उच्च शिक्षा विभाग की ओर से, जैसे यह हमारा अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम्स नैप्स चलता है, ऐसे हायर एजुकेशन में नैट्स चलता है, एनएटीएस। उनको मैंने कहा कि जो डिप्लोमा और डिग्री है, पहले उसमें सिर्फ डिग्री इंजीनियरिंग वालों को देते थे वो अप्रेंटिसशिप का सुविधा। हमने अभी उसको, क्योंकि दुनिया बदल रहा है, जॉब की नेचर बदल रही है, आजकल फिनेंशियल फिनटेक एक ऐसा एक दुनिया बनी है जिस फिनटेक में बीकॉम वाले स्टूडेंट चाहिए, आईकॉम वाले स्टूडेंट चाहिए, उसके लिए कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग का या डिग्री इंजीनियरिंग का आवश्यकता नहीं है। उसकी इंडस्ट्री कौन होगा, उसकी स्पॉन्सरिंग बॉडी होगा चार्टर्ड अकाउंटिंग फर्म, कंपनी सेक्रेटरीशिप की फर्म, कोई सोशल एनालिसिस करने वाले संस्था, सोशल कंसल्टेंसी करने वाले व्यवस्था में भी वो अप्रेंटिसशिप ले सकता है। नैट्स और नैप्स दोनों को हम लोग भरपूर इंडस्ट्री यूज करें। भारत सरकार की ओर से सालाना, मैं तो अभी इसका कैलकुलेशन कर रहा था, स्पेंडिंग यही हो जाएगा अगर 10 लाख करेंगे एवरेज। आप इंडस्ट्री को मैं दायित्व देता हूं, 1,500 रुपया हम देंगे। अगर आप उसके ऊपर 1,500 की 75% आपको देना पड़ेगा, यानी कितना होता है, 7,500 रुपया। 7,500 रुपया आप दोगे, इसमें टोटल उसके अमाउंट होगा 5,000 रुपया आप दोगे, 6,000 रुपया आप दोगे, तो हम 1,500 रुपया देंगे। 6,000 रुपया, 6,000 रुपया की पेमेंट पे आप दोगे 4,500 रुपया, हम देंगे 1,500 रुपया। 1,000 रुपया भी हमसे आप लेने में आपको 4,000 रुपया कि उसके हायर स्टाइपेंड देना पड़ेगा। 4,000 रुपया एक स्टूडेंट के लिए पर्याप्त है। वो 4,000 रुपया मंथली स्टाइपेंड लेगा, आपकी काम करेगा, उस 4,000 रुपया में वो अपना कैरियर बनाएगा। महीने में स्कॉलरशिप उसको मिल रहा है, उसमें सरकार 1,000 करोड़ रुपया दे रही है, 1,000 रुपया दे रही है। उसकी अगर खर्चा पूरा 10 लाख में हमें 1,500 की बैंडविड्थ में भी खर्चा करना पड़े, तो हमारी दायित्व बनेगी लगभग 2-2,500 करोड़ रुपया हम उसको खर्चा करेंगे। हायर एजुकेशन में भी 2-2,500 करोड़ रुपया है। सालाना 5,000 करोड़ रुपया में अप्रेंटिसशिप में खर्चा करने की सरकार की इन प्रिंसिपल व्यवस्था है। इन प्रिंसिपल इंडस्ट्री को आगे आना पड़ेगा, इंडस्ट्री उसमें से को फायदा में रहेगा और हमारे बच्चे फायदे में रहेंगे। पढ़ाई और कमाई, डिग्री और कॉम्पिटेंसी और नई प्रकार की कॉम्पिटेंसी, दुनिया जैसे मैंने कहा बदल रहा है, उसमें नई प्रकार की कॉम्पिटेंसी को
हम अप्रेंटिसशिप के माध्यम से मैंने फैक्ट्री की फ्लोर पे रिटेल चेन यानी कहा एक बहुत बड़ा मॉल में वो काम कर सकता है, वो उसके लिए फैक्ट्री है। मेरे को अच्छा लगा, बहुत इंडस्ट्री एसोसिएशन उसमें से जुड़े हैं। मैं तो कहूंगा विभाग जिला स्तर की इंडस्ट्री एसोसिएशन तक पहुंचे, इसकी अवेयरनेस कैंपेनिंग बढ़ाए, कहां कहां अप्रेंटिसशिप करते हैं किया जा सकता है उसकी कल्पना दे। अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप ये दोनों, कई जगह पे तो इंटर्नशिप में भी स्टाइपेंड मिलता है। हमारे देश में 30 करोड़ बच्चे हैं जो स्टूडेंट की रोल पे हैं। अगर उसमें मैं 9 से ऊपर के बच्चों को मैं कैलकुलेशन करूं, ये हो जाएंगे 9th 10th 11th 12th और हायर एजुकेशन, इसमें लगभग हमारे देश में 12-13 करोड़ बच्चे हो जाएंगे जो विभिन्न स्थान पे पढ़ेंगे। ये पढ़ाई करते करते अगर स्टाइपेंड बेस्ड हैंड्स ऑन कुछ स्किलिंग उनकी आ जाएगी, तब उनकी जिंदगी में बहुत फर्क आएगी। इसीलिए ये अप्रेंटिसशिप व्यवस्था की कल्पना किया गया है। मैं आप सभी को आज के अवसर पे बधाई देता हूं। उससे और बहुत बढ़िया बात है कि आपके आने वाले समय में अतुल जी ने इतना बढ़िया भवन बना ही लिया, उसका औपचारिक उद्घाटन शुरू नहीं हुआ, सब ट्रायल रन चल रहा है, स्किलिंग हो रहा है, उसमें से अपग्रेड हो रहा है। इसमें हॉल भी इसीलिए बनाया है, और ये कंपेयर करने वाले और कोई बाहर से नहीं लाते, डिपार्टमेंट ऑफिसर को भी बुला लेते हैं, इनका भी स्किलिंग होती है, कॉम्पिटेंसी लेवल उनका भी बढ़ती है। आप चिंतन शिविर करोगे। मैं 2-3 अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरे मन की 2-3 बात आया कि मैं उसको सुझाव देना चाहता हूँ। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आई है सुब्रमण्यम जी की, जो थोड़ी देर पहले हमारी भारत की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते थे, प्रोफेसर सुब्रमण्यम जी ने आजकल इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में काम करते हैं। उन्होंने आज आर्टिकल लिखा है, लिखा तो इंग्लिश में, लेकिन उन्होंने कहा है कि देखिए, मातृभाषा में किसी की अगर पक्का दखल होती है, तब वो सेकंड लैंग्वेज को ठीक से समझ पाएगा। अगर शुरू करेगा एक अलाइन लैंग्वेज से, नॉन मदर टंग से, ना उसमें भी दक्ष होगा ना मदर टंग में दक्ष होगा। अब देखो, ध्यान करो, कई समय में हमको अपने मातृभाषा का एक शब्द क्रिटिकल की अगर मैं आपको हिंदी में ठीक से पूछूं, आप 2-4 मित्र ऐसे निकलेंगे जो उनको कहना थोड़ा इधर उधर हो, क्लिष्ट, कठिन, दिक्कत वाला, ऐसे कई शब्द आएगा। मित्रों, ये पूरा जिस दुनिया के लिए हमें रचना कर रहे हैं ना ये अप्रेंटिसशिप, इसमें तो बोलचाल की भाषा स्थानीय भारतीय भाषा ही होनी चाहिए, कोई भी भाषा हो। तो तमिल भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, अहोमिया भी हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं, इंग्लिश भी हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। उसमें इंग्लिश के 6 शब्द लगा ही दो। शुभम अभी बिहार से है ना, बिहार ऑलवेज स्पीक्स इन इंग्लिश, देन विल बी प्रूव योरसेल्फ यू आर कॉन्फिडेंट। तो शुभम ने 2-4 इंग्लिश ठोका कि नहीं ठोका? शुभम, आपको बधाई। तो कहना पड़ेगा ना, मैं भी जानता हूं ना। मित्रों, ये विषय पे आप आपकी चिंतन शिविर में थोड़ा ध्यान दोगे, और कई विषय आपने चिंता, आपके अनुभव क्या है, पर मैं उसमें कहूंगा इंडस्ट्री उसमें अपना खुल के मत बताए। इंडस्ट्री को क्या लगता है? अभी सरकार कोई रेगुलेटरी मोड पे नहीं है। पहले इस प्रकार के अप्रेंटिसशिप ऐसे विषय पहले भी तो था, क्यों नहीं हुआ? क्यों? अप्रेंटिसशिप एक्ट लागू हुआ कि नहीं हुआ, लेबर डिपार्टमेंट की लोग, यानी हमारी डिपार्टमेंट, अभी डीजीटी तो लेबर ही है ना, लेबर से अलग होके आई है। ये पहुंची तो फैक्ट्री वाला ताला लगा के भाग गया, ये बाप रे, लेबर डिपार्टमेंट आया है। अप्रेंटिसशिप एक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा देखने के लिए, इसलिए मोदी जी ने पहले आया अप्रेंटिसशिप एक्ट को सरल कर दिया, कंपलसरी हटा दिया, वॉलंटरी किया।
आपकी मदद से इस चिंतन शिविर में आप और क्या-क्या अच्छा हो सकता है उसकी चिंता करो। मैं फिर आपको शुभेच्छा देता हूँ। बहुत-बहुत बधाई। सर, आपके ज्ञानवर्धक शब्दों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। मैं आशा करती हूँ कि आज का यह कार्यक्रम युवाओं के जीवन को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए हम सभी को प्रेरित करेगा। आज के इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति के लिए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, आदरणीय सचिव महोदय, आदरणीय अध्यक्ष एनसीवीटी, डीजीडीजीटी मैम, सीईओ एनएसडीसी एवं सभी अतिथि अधिकारीगण, इंडस्ट्री प्रतिनिधि, मीडिया के मित्र एवं देश के विभिन्न भागों से जुड़े हुए सभी क्लस्टर प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं सभी अतिथियों को चाय के लिए आमंत्रित करती हूँ और सभी पैनल हेड से आग्रह करती हूँ कि वे चाय के उपरांत अपने ब्रेकआउट सेशन का आरंभ करें। चाय का आयोजन लॉबी एरिया में किया गया है। महानुभाव, पैनल डिस्कशन के बाद एक बार फिर हम सभी 6 बजे सेशन के आउटकम पीपीटी के साथ यहाँ एकत्रित होंगे। धन्यवाद।
कौन से सर? अभी मैं अभी मैं यहाँ पर हूँ। इनको यहाँ ग्राउंड पे फोटो थिएटर में। ठीक है, ठीक है। सही आ रहा है? सही आ मुंह तो ना पकड़ो तो अरे इतने अभी देखन चाहते हो भाई से कर दूंगा मेरा राहुल
ये पैनलिस्ट लोग हैं। फोन एक एक करके हम्म? ये है ये है मैं करता हूँ। ठीक है ठीक हो जाएगा। Good afternoon to all of you. I would request all of you to be seated. We are about to start. Economic Advisor, MSDE, and Ms. Hena Usman, Joint Secretary, MSDE. And the esteemed panelists for today's session are Ms. Samira Saurav from the Ministry of MSME, Tina Soni, Joint Secretary, Department of Fertilizers, Taikamba Amir, Additional Director, Tech Education, Nagaland, Mr. Anthony from the Logistics Sector Skill Council, Rajat Arora, Policy Programs Manager, Meta India, and Anil Bharadwaj, Secretary, FISMI. Now I would request the chair to take over the discussion. So before we start, we have a small PowerPoint presentation, which basically presents certain facts about where we are in terms of NAPS, how we have progressed in recent years, and what are the areas of concern on which we'll need your suggestions, recommendations. So, Pritam, you can start. Honestly, yeah. So the discussion of today's theme of this discussion would be on the creating a diverse ecosystem for promotion of entrepreneurship, where the basic broad areas of discussion would include increasing greater participation of youth and industries from northeastern region in apprenticeship,
Then to deliberate on the area of creation of value proposition of entrepreneurships for MSMEs and industry clusters. Then to discuss on the innovative models of apprenticeship to map the local needs of aspirational districts. So the discussion would also look into the question of what are the sectors which are most suited for promoting apprenticeship in rural areas, Northeast region, and aspirational districts. And finally, to deliberate on what role can be played by local industry chambers, artisan clusters to promote apprenticeship as a way of acquiring traditional skill sets. Now I would request the chair to take over the discussion. So I'll first of all request my panel members to give their views. So basically, what we are looking at is that we have seen some impressive growth in under apprenticeship scheme the last 3 years, both in terms of engagement of apprentices as well as establishments engaged in offering apprenticeship. But there are many states of the country where this program needs to be taken. Those states are basically in the northeast, hilly areas. So, how do we take the scheme, the benefits of the scheme to those areas? That is what we want to discuss and take your views on. I'll briefly. It's not on. So, I'll request the panel members to briefly introduce themselves and then give their suggestions. है ना? Yes. Thanks, Chair. My name is Anil Bharadwaj, and I am Secretary General with Federation of Indian Micro, Small and Medium Enterprises. FISME is a national body. It has 743 MSME associations as its members, which includes cluster level associations, regional associations, sectoral associations, and so on. And we have been working, many of our associations are working in apprenticeship promotion. And one example that I would like to share with you is perhaps that would tell us that or would give us insights that how to move forward. Just near Delhi, in the Rai industrial area, Sonipat, one of my vice president is the president of the local Rai Industries Association. And in the last couple of years, they have been working for promoting apprenticeship. And the the methodology that they have adopted is, first of all, they tied up with the ITIs, local ITIs, and they have sensitized the local industries, member industries. So they would help them, first of all, register with the portal, let the ITIs also upload the data of the trainees available, and then they would organize fairs for a week for a specific trade, like for welding one day, electricals one day, and so on and so forth. They would also invite the ITIs there and then, and they would conduct interviews, and whosoever is found suitable, there and then the contact letters are given. And the success is such that almost for last 2 years, the placement in Rai industrial area and the nearby Sonipat district is almost 100%. So I think we can learn quite a lot that how to move forward in almost all clusters. And we feel that the biggest problem that is there is lack of awareness and apprehensions that are there in the mind of people that are part of the legacy. Minister also touched upon it. But that's really a thing of past. Times have changed. And we have to showcase the best practices adopted by people like, for example, the association that I mentioned, Dry Industrial Area. And we need to take them. And if instead of, for example, are talking to industries or let the officials talk to them, let the industry leaders talk to them and say that why they have adopted or promoted apprenticeship in their area and what has been their experience and what are the advantages that they have accrued out of that. So I think these are a couple of my initial comments, and maybe later I could add. Thank you, Mr. Bharadwaj. Can you hear Mr. Rao? Yes.
Thank you very much to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for inviting us. I am Rajat Roda. I am representing Meta. And this is one interesting topic, and the way things are evolving quite recently that we have seen in the ecosystem is quite fascinating for us as an organization, and we are also kind of evolving. I would love to just pinpoint on certain highlights or learnings that we have accumulated. So, example, when we started reaching out, so Meta is basically into the business of small businesses. When we started interacting with small businesses, understood we tried to understand what are the challenges, what are the various opportunities that these small businesses are facing. One of the key aspects that came to our knowledge was access to markets, and how do we make sure that they are able to connect with their customers. Plus, specifically focusing on this topic, diversity and inclusion. This is one of the most important topics because women entrepreneurs, specifically in times of COVID or pandemic, were worst impacted, not just because of the financial constraints, but also because of emotional constraints. And this is also creating a ripple effect, not just in the small business ecosystem, but small business ecosystem that is creating more livelihood opportunities or apprenticeship opportunities for the youth in our country. But technology is also a force multiplier, an equalizer on the ground. So we recently partnered, as Meta, we recently partnered with Confederation of All India Traders, and this is where we are reaching out, going on the ground, training people or small businesses on how to build and grow their businesses. Eventually, if they are building and growing their businesses, which is through a network of almost 2 crore traders across the country, that definitely will create a lot of new opportunities for youth coming into mainstream. That's number one. Number two, second key interesting learning point, or my initial point that Honorable Minister also touched upon, was the localization or language translations. There are new tools like Llama language model, which Meta recently came out with. Is these are kind of tools once they go out in the market where people or the ecosystem can come together, breaking those silos, government, corporates, non-profits, coming together, breaking silos. And how do we make sure that the training content is localized in or contextualized as per local requirements? So it's not just, starting point is not just like creating an ecosystem, but also making sure that there is a direct connection between demand and supply. And to what Mr. Bharadwaj was also emphasizing upon, how do we create awareness about these initiatives and programs in a very snackable language? Sometimes when we go out on the ground, it's very difficult for these youth to understand very heavy duty documents. But the new language of internet is audio, video, and voice. So, is there a possibility where we can translate these conversations into languages that people are understanding? So contextualizing is definitely the key. And thank you again to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for giving us this opportunity. Over to you, ma'am. From the progress under the scheme that we have, it tells us that there is a spatial concentration of benefits of apprenticeship being availed. Top 7 states, which have a share of more than 5% in total apprenticeship, account for about 73% of total apprenticeship being availed uh, as of now. So if we look at the data of last 4 5 years, and the second is also concentration in terms of industries. Again, 10 sectors account for 80 to 90% of the total apprenticeship. And there too, these are the large industries. Our penetration to MSMEs has been lower. Mr. Bharadwaj gave an example of Rai industrial area or near Sonipat. Those are successful interventions which can be replicated in other areas. And we have a representative from Ministry of MSME, Economic Advisor Samira Saurabh. I'll request her to share her views. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I'm Samira from Ministry of MSME.
Uh, from what I understand, I'm not minutely aware of all the minute details of the scheme, but I understand that a lot of work and effort has been going on. And simultaneously, even in the Ministry of Small and Medium Scale Enterprises, there is an increased awareness and need to especially include the vulnerable sections of society, which are women, which are SC and ST beneficiaries. So, uh, the desire to include is paramount, but on the ground, schemes face a lot of problems in implementation because of the problem of identification of the target beneficiaries. And where skills and training is concerned, apart from the concerns of data management, access to appropriate standards of skilling, and access to relevant information and data, the impact assessments somehow have been lacking. So, once a training program is over, or we get a report, all India, that these many number of training programs have been conducted, and these many number of people have been trained. But on a day-to-day basis, in the daily chaos and humdrum of official life, it is very difficult to actually assess quality of training or the quality of skills which is being imparted, and what is the end effect, what is the impact the programs have had on the people who have received the skilling and the training. So this is a one area where we feel that we are way behind, and it seems like speaking about it may seem a often repeated set of statements, almost like a cliche, but this is the truth. So I think that efforts, we do not only need to look at the numbers, but a serious effort has to be made from the officers in the government system and other stakeholders involved to actually assess the programs and to an attempt to assess the end results, the impact, and incorporate that within the various number of schemes which are already progressing in government, and try to assess and ensure that we are able to derive the best possible results and prepare the workforce for a better future. Thank you, sir. Um, at the cost of reputation, I'll again say that the challenge that we are facing is about spatial and sectoral concentration of whatever apprenticeship is happening. So one obvious reason of that is that there are not many establishment in those states. So is there something that we can either we reach them or we enable them to reach the centers where apprenticeship facilities are available or can be made available? So on that, we'll need your suggestions, recommendations. Next, I request Mr. Anthony, who represents Logistics Sector Skill Councils. Thank you, sir. Good evening, all of you. It's really an honor to be a part of this esteemed guest at the dais here. And I represent the Logistics Sector Skill Council, so I'll get quickly to what apprentice means to us. We do have a sensitization program done with all the industries, the 12 subsectors that we handle. And the awareness is picking up. The industries are very honest about the fact that first they were not going into the system. They were apprehensive about it. And now that the standardization of skills that they demand is kind of mapped with what trainings we are doing across the country. Well, I'll just give you a small example here. Um, I'm more sensitive about the vocational education and apprentice because that's where I come from overseas. Back in Ireland as well, there is a consortium of industry players, MSMEs,
and also the artisans put together as a apprenticeship division where they specialize in reaching out to tier 2 and tier 3, where they be a hub and spoke where they kind of sensitize the apprentices, the families about what is in store for them. And that's how they complete their 2 years apprenticeship. And this is where I want to add something what our honorable minister mentioned, that about the guy, the candidate from Bihar. What would he do after he finishes his apprenticeship? Would he directly be admitted into a particular level? Would he get through his final year? So in Ireland, in Germany, the apprenticeship model, what LSE wants to bring, and we are trying to get that here as well, is can they enter into the level 6? Because in the Ireland apprenticeship is where they bring level, the moment he finishes the apprenticeship, he or she, the candidate, gets into a level 6 national qualification framework, allowing them, giving them access to higher education and not taking it away from them. And what I also, what at LSE, what we wanted to is break the ceiling as to why should it be only an entry level job. A lot of industries come up to us and tell us that we always had this thought that it is just an entry level. They will just be at a hay grade, and then they can grow if they want. But we want to break the ceiling. We want to bring them into a little senior role in a middle management as well while they're getting trained. Industries are ready to come, to answer your question. Industries are ready to come towards the center point or go to the states that you mentioned, creating a system where they can get trained in a residential format, non-residential format, but very aspiring for them to move out of that place, whether it's even NER or any other aspirational states, getting them to a particular place and training them and preparing them for the world as well. So that mapping is what we are currently under the sensitization program, and we're doing it with different states. We've just started and bringing all our 12 subsectors under one umbrella. So that's our motto for now. We have one state representative from Nagaland, Mr. Amer. Yeah, please. Respected sir, I am representing the state of Nagaland. First of all, I would like to admit that the state of Nagaland has representing or attending this program to learn from other success states who have done in this area successfully. As I've said, when we look at the datas, as I was going through the various states on promoting entrepreneurship, the awareness program that was conducted, and then the number of students or persons trained on apprenticeship training program. Let me tell you, the state of Nagaland is second oldest next to state of Assam. However, when we look at the economic development and then to keep the state at par with other advanced states, northeastern region or the state belonging to northeastern regions are still far behind, and particularly the state of Nagaland, due to various reasons. And then, as you know, due to political unrest, the growth of economic development and then infrastructure development in the state was hampered, for which the state could not avail the opportunity. Or rather, we have missed the opportunity to catch hold of the developmental activities. With the present dispensation of the central government under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, we look forward the state and the region will go forward, and especially with this proposition, act is policy, and whenever any central ministers visit the states in the region, they always stress on one thing, that is, India will not develop unless northeastern state is developed. So the government of India has given stress, more focus on the development of the northeastern regions because the region has been left behind. Today we are here. I stand with all these
prominent leaders who have come from much well-developed states, but I represent my state today with nothing to share any successful or rather say success stories to you all. As I've said earlier, we came here to learn more from the other states. Sir, one thing what I like to say is that regarding this promoting apprenticeship in the state, no doubt the state of Nagaland is lagging very behind. There are many reasons, but I just would like to mention two things. Now, the students, the youth, they don't want to take up this such program because they have the perception or impression that even if I train on this specific field, there's no job avenues because of lack of industries. And then another reason is that due to weak economic conditions of the people, you see most of the youths who have dropout students, they belong to the economically weaker sections. Only few 10% of the creamier families, their children go to better school or colleges or to other states. So that is why you see that mentality is there, and then they have that phobia that they don't want to go outside the state or even beyond northeastern region. So, but when I when I saw the presentation from 7 states in India, I have learned, and as a responsible officer of the department, it is my it is my uh, commitment that I will go back to the state and then I will take initiative to promote this kind of apprenticeship program because it is an effective tool that which aims to create skilled workforce in the country. And lastly, the state of Nagaland is also going to implement NEP 2020, where it is also mentioned about vocational education. So it is my desire that the component, this apprenticeship training program, will be incorporated, and NEP 2020 makes it compulsory. So that is my opinion, and then of course I will learn from the other panelists. Okay. Okay. Thank you so much, madam. You want to say something? Okay, thank you, Mr. Amer. Now I invite any views, comments, suggestions from the audience. Yeah, Lalit ji, mics are there. Uh, Good evening, everyone. This is Lalit Sharma from Indian Institute of Entrepreneurship. Sir, while we are talking about this apprenticeship in Northeastern region, I think it is very important for us to understand the ecosystem in the Northeastern region. You see, we are well aware that there are not many industry clusters over there, but there is one thing which is there, that is artisan clusters. There are clusters wherein there are many skilled people who are working over there. Each cluster having maybe 500, 600, or even thousand of artisans who are working in that particular cluster. They are highly skilled people. They are working in almost all the domains, be it textiles, handlooms, food processing, and many others. Now, how can we utilize those clusters, those artisan clusters, for this particular apprenticeship scheme? I think this is one area which we need to think upon. And it is not just for skilling people. they the people who really want to enter into the field of, let's say, northeastern handloom, they would like to understand, they would like to start their entrepreneurial venture. I think this scheme should be extended to those potential entrepreneurs also who would like to go and understand the things, how they are working, how they are doing, understand those skills from them, and then start their own enterprises as well.
See, we have been getting inquiries from Indian Institute of Management also that their students are willing to go and take their internships in those clusters because they would like to know what is happening in those clusters, how those clusters. I mean, how to get that skill which those people have, so that they can actually utilize those skills to develop their enterprises in all. So, I think this is one important area where we'll need to really think upon. Thank you so much. Good afternoon. My name is Amol, and I particularly belong to tourism and hospitality sector skill council. Uh, Although the debate is too long, sir has also given one viewpoint. My suggestion and towards the northeast states, as we already have more than 100 industry partners working there, and as we are from tourism and hospitality sector, there are a lot of hotels coming, and there is a lot of scope there, but they are too small and too budget hotels that they are not even organized sector. They are not even registered even under PAN number, GST number. So we should think that how we can involve them into the mainstream where they are not organized. A dhaba wala or a street food vendor also have the opportunity to make apprentices and to make them learn. So, how to involve that sector or that stream into the mainstream line? Because in apprenticeship right now, we are only and only focusing on the organized sector, whether any of the sectors. Second is my suggestion towards the panel and towards a ministry. And as per my experience, there is a lot of demand which is coming from the industry point of view in each and every sector, whether it is logistics, telecom, construction, but we have to focus on the supply side. So, the supply of the students from the ITI, from the PMKVY center, either from any center, people are not ready to join as apprentices. It is not still, if I am a person, I have to make my child go to work. I will not ask him to do apprenticeship, then join a company. So we have to make little aspirational, like sir has in the morning, honorable minister has said that we have to, according to the NEP, we have to make them realize that under 2 year program or a 3 year program, if you do, you will get diploma or some certificate which holds a value. Nowadays, also we are getting a certificate, but the certificate should hold a value of uh, equivalent to some engineering program or some program. So that is why the supply side is too weak to join that apprenticeship program. Third, uh, third point I want to highlight that from the northeast states, if we see the numbers, number of industries are less, but the supply side is too good. That means the people from Nagaland, Assam, all the northeast states comes to the main cities and work in tourism and hospitality sector. And in our sector, they are doing very well. If we are talking of the numbers and we calculate according to the ministry the number of contracts or the number of people who are engaged, we should not calculate that way. The person who has come from the state to work into another state, the person should be counted in this number on the supply side. It should not be on the demand side. That demand, if Maharashtra has 1 lakh numbers, the person who is doing apprenticeship is not from the Maharashtra. So that calculation and the perspective of the ministry calculating the numbers or the states is different than the reality. In the reality, on the ground, northeastern states have given many apprentices to our sector, sir. Thank you. You made two important points, which was also made by Mr. Anthony about the progression pathway, and which our honorable minister also highlighted in his address to all of us. And I think this issue is largely being taken care of through new national education policy and through the national credit framework.
The other point that you made about the supply and demand states, we acknowledge that such movements are already taking place. Is there a need to further promote such movements? Can we think of some incentives so that states which have not been able to take benefit of this scheme to the extent that they should have, can we think of some incentive structure? Do we need that or do we not need that? Are there some other ways of doing it? So on that also, uh, anyone from the audience, if they want to share something? Yeah, please. Yeah. Good evening, everybody, and the distinguished panel. This is Chetna Jain. I represent an organization called Confederation of Women Entrepreneurs from Hyderabad, Telangana. We have been an industrial cluster and doing this apprenticeship program for almost a year now. So our observation is, there is a lot of apprehension and lot of preconceived notions about what an apprenticeship program would be. Being a women organization, we are trying to push more girls to come forward and take up all the trades, because I myself am an architect. So people say, okay, you've broken the glass ceiling, but I say there is no glass ceiling, because every profession can be taken up if you really want to do it. So one example I can quote, we had gone to one of these ITIs where we always go and conduct awareness programs. I was very surprised that there were two girls in the mechanical engineering trade. So, it really intrigued me. I said, why did you take this up? The answer that girl gave me was, Madam, there is nobody who is taking up mechanical, and I wanted to take up mechanical because I will be employed better. There are no women in this. So that tipped me off. I said, if we can create awareness more about such kind of trades where women can really go, I think we will have broken a really big notion and moved forward. That's point number one. Point number two, the apprehension about apprenticeship program again is that they think, okay, it's a vocational trade, then they have nothing beyond this. That's the end of the road. So honorable minister sir said that we will connect it to the mainstream education and give a diploma or whatever, and entry, instead of entry level, mid manager level, probably they can be promoted. The next suggestion I feel is, once they get into apprenticeship, maybe a little of hands-on experience and a little of R&D is also added to that, because theoretically, yes, they are learning hands-on in the industry, whatever they are employed, they are learning. Further on, if we need to tap their think tanks, I think a little more way forward can be created. We can pique their curiosity and give them more avenues. So, and we are trying to do this with more girls. Personally, for Amir sir from Nagaland, sir, I have 3 architects from your state working with me currently. I'm very proud to say that these girls are doing extremely well with us. So Nagaland is not far behind. I think it will do really well. Only thing is, yes, we need more women to come ahead. I'm not being a feminist talking on behalf of women here, but I feel if a women force is tapped more, growth of this country will be multifold. We will be the largest contributors to the GDP of this country. And so, as a president of a women entrepreneurs organization and an entrepreneur myself, I think we will try our best to promote entrepreneurship and apprenticeship in our state. And please take our suggestions as and how it is. Thank you. Anyone else? Good evening, everyone. This is Dr. Swapna Mishra from Textile SSC. While I agree with the tourism representatives' perspective of different states being under supply and the ones who are actually providing apprenticeship, there's another aspect to it that a large number of the industry is unorganized, and especially MSMEs, where the workers are not actually formally employed. वो कच्चे employees रहते हैं और उनको स्कोप रहता है अप्रेंटिसशिप का वहाँ पे, लेकिन जनरली जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा कि लेबर वाले आएँगे तो वो फैक्ट्री बंद करके चला जाएगा। Because of those apprehensions, they don't get into apprentice because they feel those numbers will go on the portal and they would know how many people we are employing and how much is our work capacity. So we'll have to think on how do we handle that, because a large chunk is also that section which could be tapped in. Thank you. That unorganized sector role in apprenticeship, I have a different view. If
an establishment is not willing to keep the employees on its rolls formally, will he be entering into apprenticeship contract at all? So that's an issue that needs to be discussed more deeply. So, sir, your question was that how to handle the answer ma'am has given, that if the women apprentices to be promoted, and how it can be done through the ministry, that we should increase the DBT amount for the women, and it can increase on the ground level, that all the women will start saving that, and establishments will also see that I have a benefit of taking a woman rather than a man. So I totally agree that women empowerment should be there in India, so that this to become developed in short term. And secondly, again, giving a quote that Nagaland or Northeast states. So the supply state should be given some of the incentives. For example, if you want to promote some apprenticeship program in some states, so the people who are joining from that state should be also awarded. Not the only the demanding states should be awarded. So this can be a game changer, that if I am a supplying state, and if I will supply on top 5, then I will be getting something in regard to from the ministry. So these are two more suggestions, sir. Thank you. Any other comments? No? Yeah, please. Develop through it. One. Secondly, I had a point also when a lot of this exposure is being given on the type of apprenticeship, and the industry is being targeted, also the education institutions and everything. But one point is there where the type of or the subjects which the student can check on, they are still not aware as to how many kind of avenues are open for them. So the avenues basically should be the exposure point where the people are able to choose, not just the student but the industry also, so that the industry also should be able to say as to what, because they shy out in asking directly, like our qualifications are there on the portal, but the industry when it is checking, they may want to do it on some other job role, but they do not approach us, so that approachability also should be there. Thank you. Okay, if there are no more comments or suggestions, what I propose is that after having heard all of you, just one more, and having heard the panelists, we'll sit together and try to finalize the recommendation from this panel for the government. Ma'am, you wanted to say something? Yes, sir. Sir, we represent Ministry of Rural Development, and we do skillings through DDU-GKY. So my only query is DDU-GKY mandate 70% placement after the training, on which the payment goes to the PIAs. So how we can incorporate NAPs, because NAPs don't have the mandate of placements further to the this thing. So can we collaborate in some way where we can allow OGT part in DDU GKY?
So Ministry of Skill Development had done this provision for PMKVY, under which what we did, after the pass out candidates of PMKVY, if they go for apprenticeship, that will be considered as a placement. Means that is one way out which we did for PMKVY, and we are open to have it in the similar way or any other mode of suitability with other schemes. So I'm just sharing my view of my JS, that we are very much open to incorporate the apprenticeship component in the other schemes. So yes, maybe after this discussion, this is one of the way forward that we would like to have a discussion with your ministry, as we have already started it. Maybe because there was some pre-scheduled thing with your ministry, we could not take it up, but definitely after this we will. Last comment for the day. Yeah, my name is Hiral Vaidya. I am from Gujarat, Ahmedabad. It is my two suggestion. First, जो हमें हमारी इंडस्ट्री के लिए डिप्लोमा कैंडिडेट नहीं मिल रहे, तो कल ही टेक्निकल एजुकेशन और सबकी मीटिंग थी, उसमें मैंने यही बताया था कि कोई भी आईटीआई कैंडिडेट को पता होता है कि अप्रेंटिसशिप क्या है और हमें क्यों करनी है, बट डिप्लोमा वाले कैंडिडेट या तो डिग्री में चले जाते हैं या उसका प्लेसमेंट ही उनको चाहिए। अप्रेंटिस की वैल्यू या तो सर्टिफिकेट की नहीं है, उसकी वजह से। तो जैसे आईटीआई में पढ़ाने के टाइम पे उन लोगों को अप्रेंटिस की वैल्यू समझ आती है, उसी हिसाब से अगर सारे सबको ये प्रोग्राम के अवेयरनेस और सर्टिफिकेट वैल्यू पता चले, तो उसमें हमें ग्रेजुएट कैंडिडेट, डिप्लोमा और डिग्री वाले हमें मिल सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो प्लेसमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सेकंड, जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं ना, उनको सर सारे जितने रिफॉर्म होते हैं या वो नहीं पता होता है। जैसे ग्रास रूट लेवल पे अप्रेंटिस एडवाइजर, तो यहाँ पे पॉलिसी लेवल पे जितना चेंजेस होता है, तो उन लोगों को इन्फॉर्म करके वो लोग इम्प्लीमेंटेशन में लाते नहीं है या किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो एक यूनिफॉर्म मैं चाहती हूँ कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो ऑल स्टेट के अंदर एक ही हो, क्योंकि कोई स्टेट के अंदर वो लोग चला लेते हैं, कोई स्टेट में नहीं चलाते हैं कि ऐसे अप्रेंटिस क्यों है। तो दिस इज 2 पॉइंट मेरे थे, तो जिसकी वजह से काफी हमारे अप्रेंटिस बढ़ सकते हैं। थैंक यू। Thank you, ma'am. So we close this discussion here and we'll sit together. You'll be the last one. No raising of hands now. Please go ahead. Good evening, dignitaries, and good evening, all the members. Actually, I am Sunil Kumar from Board of Apprenticeship Training, Assistant Director. Actually, I was working previously as a scientist, where I was posted 3 years in Gangtok, Sikkim. तो व्हाट आई फील सर कि थोड़ा सा काउंसलिंग लेवल पे भी ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं और यूथ हैं, वो ज़्यादा मतलब पैसे को इम्पोर्टेंस देखते हैं करंट में। तो आई हैव सीन मेनी स्मॉल किड्स, जहाँ पे अगर हम कोशिश कर रहे थे कंप्यूटर लिटरेसी बढ़ाने का या एआई या वर्चुअल रियलिटी पे काम कर रहे थे, तो बच्चे बोलते हैं कि आई वांट टू बी अ ड्राइवर। ड्राइवर लोग 50,000 कमा लेते हैं, व्हाई शुड वी गो विद दिस ऑप्शन वेयर वी कैन अर्न हार्डली वी कैन अर्न एनीथिंग इन दिस सिक्किम। तो सर आई हैव वन सजेशन, कैन वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे, जैसे मैम ने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेजेस से नहीं मिलते हैं, तो वी हैव सीन कि आईआईटीज में इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, जहाँ पर वो स्टार्टअप्स को इनकरेज करते हैं एंड दे हैव अ फंड देयर। तो लाइक आईआईटी दिल्ली हुआ, पटना हुआ, बहुत जगह की 20-50 स्टार्टअप को इनकरेज कर रहे हैं। तो कैन वी हैव दैट स्ट्रक्चर इन नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे हर पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर इंजीनियरिंग कॉलेज को एटलीस्ट 2 स्टार्टअप को इनकरेज करने का ऑप्शन मिले, और स्टार्टअप में भी ऐसा ना हो कि कोई भी कोई आइडियाज लेके आ जाए। फॉर एग्जांपल, वी हैव A to Z colleges in suppose in state Sikkim. So A college should work on PCB design,
तो अगर किसी को कोई पीसीबी डिजाइनिंग या कोई स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा है, एलईडी बल्ब बनाना चाह रहा है, उसका पैनल बनाना चाह रहा है, तो उसी को इनकरेज करें। फॉर एग्जाम्पल अगर सी लेते हैं, कोई आईओटी पे काम करना चाह रहा है, तो सी कॉलेज शुड इंक्रीज ऑल द आइडियाज ऑन आईओटीज ओनली। सो स्पेसिफिक ईच कॉलेज शुड प्रोवाइड एटलीस्ट 2 ग्रुप ऑफ टीम, स्टार्टअप को इनकरेज करे और उनको फंड करे। तो वहां से क्या आएगा कि अवेयरनेस भी आएगा कि स्टार्टअप है, एंड द मैंडेट फॉर देम इज दे शुड हायर 2 अप्रेंटिसेस। सो 2 स्टार्टअप है, और दोनों स्टार्टअप के पास 2 अप्रेंटिस काम कर रहे हैं टेक्निकल बैकग्राउंड से। टोटल 4 अप्रेंटिसेस ईच कॉलेज इज हैविंग। सो यहाँ से सर दोनों चीज हमारे पास आ रहा है कि एक तो हम टेक्निकल को इनकरेज कर रहे हैं स्टार्टअप को, द स्टार्टअप में भी फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, जो भी जिसके पास आइडियाज है, जिसके पास नॉलेज है, लेकिन जो अप्रेंटिस रहेगा शुड बी फ्रॉम नॉर्थ स्टेट, ताकि उनको पता चले कि भाई टेक्निकल सेक्टर भी है जहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी कंपनी खड़ा कर सकते हैं, एंड वी कैन डू फ्यूचर समथिंग लाइक दिस। दिस माय लास्ट सजेशन। धन्यवाद। थैंक यू। So we are closing the open discussion now. Thank you all for your participation, very active participation, and we'll definitely learn, taken your suggestions, and we'll keep that in mind while we are making our recommendations from this panel. Thank you. Thanks. Yeah, Rita. On behalf of the ministry, I would like to extend my thanks to all of the esteemed panelists and the participants for giving your valuable insights and suggestions on the theme of today's discussion. Today's session gave us lots of insights on the topic, and this will help the ministry to identify our future course of action in creating a diverse ecosystem for promoting apprenticeship. Now, I would like to request the chair to felicitate our esteemed panelists by presenting them a sampling. Okay. Thank you, sir. Thank you. For coming. One more. है ना? How do we do it now? I'm prepared. I'll show. खाली स्क्रीन पे दिखा सकते हो? Can you close other screens? Close the other screen. Five minutes. I know. Ask for your experience. Let us choose very good. Sure.
They try for whatever. Didi का मैंने जाते बेटे के साथ दीदी पेन कहाँ गई? Where are my pens?